Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to the channel. Today we are going to discuss a very important topic in O levels mathematics that's called compound interest. ज्यादातर ये टॉपिक आपको पेपर 2 में ही नजर आएगा, चूंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो पेपर 1 में यानी विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ये आपको पेपर 1 में नजर नहीं आएगा क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इसको मुख्तलिफ कंडीशंस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंड लफ्ज खुद इस बात को शो कर रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट से ज़रा मुख्तलिफ होगा यकीनन। कैसे मुख्तलिफ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, आई देखते हैं इस बात को। यस, फर्स्ट लुक एट द फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये आपके सामने मौजूद है। ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, आई देखते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड अमाउंट, वो अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट के साथ बाद में मिलता है बैंक से। यानी अगर आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं, उधार देने के बाद उस टाइम पीरियड के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे तो यू विल गेट योर ओन अमाउंट as well as the amount of interest as well. That's called accumulated amount. प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आप किसी को या तो उधार देते हैं या किसी उधार लेते हैं या बैंक में जमा कराते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपस में तय हुआ रेट, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनाब आली, दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन गिवन टाइम पीरियड। याद रहे एन का ताल्लुक ईयर से नहीं है, एन ये बताता है कि आप गिवन टाइम पीरियड में कितनी मर्तबा इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं। ये एक जरा मुख्तलिफ चीजें इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन says find the compound interest on $1,500 for 5 years at 3% per annum. annum हम कहते हैं ईयर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। कंपाउंडेड एनुअली, जनाब ये सवाल बट बात है बड़ी अहम है। कंपाउंडेड एनुअली से क्या मुराद है? हमने सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसी कोई चीज नहीं बोलती जनाब। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह है कि ये साल में एक दफा भी अप्लाई किया जा सकता है, साल में दो दफा भी अप्लाई हो सकता है, साल में तीन दफा भी अप्लाई हो सकता है, चार दफा, पांच दफा, छह दफा, जितनी दफा वो आपसे डिमांड करेंगे उतनी मर्तबा इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा। बट राइट नाउ दे आस्क यू द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक ही दफा इंटरेस्ट लगना है। जनाब फॉर्मूला आप देख रहे हैं आपके सामने, फॉर्मूला भी हमने मेंशन किया है, अगेन द सेम फॉर्मूला। यस, principal amount, yes, $1,500 is your principal amount that you are going to be invest. 3% इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है, टाइम 5 years है एज मेंशनड हियर। हाँ जनाब आगे, अब आप सोचोगे पी यहाँ फिक्स कर दूंगा मैं, आर यहाँ फिक्स कर दूंगा, व्हाट इट वुड बी द एन। जैसे मैंने आपसे कहा कि एन इज नॉट डजंट रिप्रेजेंट द इयर्स, हु व्हाट इज गोइंग टू बी एन। लेट्स सी, यहाँ पर टर्म आई है कंपाउंडेड एनुअली, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। मींस इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड वंस इन अ ईयर, साल में एक दफा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि 5 साल में कितनी मर्तबा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यस यू आर राइट, 5 टाइम, 5 दफा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आइए देखते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एज यू कैन सी 1500 is the principal amount, 3 is the rate of interest, and how many times we applied the interest। जनाब कैलकुलेट किया हमने एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। फिर दोहरा दो अपनी बात को कि जनाब ये आपके सामने वो अमाउंट आया है जिसमें इंटरेस्ट एंड योर ओरिजिनल अमाउंट इंक्लूडेड, दैट्स कॉल्ड एक्यूमुलेटेड अमाउंट। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस अब आप इस अमाउंट में से अपना ओरिजिनल अमाउंट माइनस करेंगे जो आपने इन्वेस्ट किए थे, तब आपको मालूम होगा व्हाट इज गोइंग टू बी योर interest. This much is your interest, or we can write in nearest dollars. Yes, $239 is the compound interest. Let's see another example. Find the compound interest. Again, याद है compound interest पूछा जा रहा है। For $50 for 2 years at 10% per annum, compounded annually. जनाब
साल में एक दफा इंटरेस्ट लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। यस, लुक एट द फॉर्मूला। प्रिंसिपल अमाउंट इज $450, rate of interest is 10%, time is 2 years given, but this is not. We will have to decide what is n. It says compounded annually means साल में एक दफा इंटरेस्ट लगेगा। 2 years में डेफिनेटली दो दफा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। ये देखिए हमने p की जगह 450 सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 2, which is the value of n here. Calculate this, we got this amount. Remember, it's an accumulated amount. This is not your interest. इस इस अमाउंट में आपका ओरिजिनल अमाउंट शामिल है that you invested, but I need interest, so I need to subtract these two. जनाब आलिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बनता है $94.5. This is your interest, compound interest in 2 years. Question number 3 देखते हैं ना। Wilson invests $5,000 at this rate per annum compound interest, compounded annually. Find the amount at the end of the third year. 3 साल बाद के उसके बैंक में या उसकी पॉकेट में कितने पैसे होंगे। याद रहे, अब उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा what is the compound interest। जनाब formula is there, we going to substitute the values। Principal amount 5,000, rate है 5.25% or 5.4%। yes, time 3 years। let's decide in, since they said compounded annually means interest will be applied once in a year। एक साल में एक दफा इंटरेस्ट लग रहा है, लिहाजा 3 साल में 3 दफा इंटरेस्ट लगेगा, तो n is going to be 3 जनाब। तो a is 5,000, आप देख सकते हैं। I've substituted all the values। Let's calculate again। This is your amount, accumulated amount, but they didn't ask you, remember, they didn't ask you the compound interest. They ask you the accumulated amount, which is $5,830 in nearest dollars, right? तो याद रखिए कि यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, आपसे accumulated अमाउंट पूछा कि 3 साल में आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसका जवाब दीजिए। Juan invests $800 as 12.5% per annum compound interest, compounded monthly। Yep, what a chunk is this। क्या इन्होंने छक्का लगाया जी। एक साल में हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है, यानी एक साल में इंटरेस्ट 12 दफा अप्लाई होगा। जी को मतलब नहीं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फाइंड द अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर। जनाब प्रिंसिपल अमाउंट $800 है, रेट हमें दिया है 12.5%। जनाब अब आपने सीट बेल्ट बांध के देखना है, इंपॉर्टेंट चीज। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5% पर एनम, यानी एक साल में 12.5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लिहाजा compounded monthly, therefore your rate of interest will also be down, will also be divided by 12, because they told you that in a year they will pay you 12.5%, but break down that interest, उस इंटरेस्ट को तोड़ दीजिए in 12 pieces in 12 months, so that you're going to have, yes, so in a month you are going to receive this much interest, you will receive this much interest, and that accumulated to 12.5% in a year। टाइम 1 ईयर जी उन्होंने कहा था एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो टाइम तो हमारे पास एक साल है, लेकिन एन क्या होगा आइए डिसाइड करते हैं। हमें मालूम है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं मंथली एज रिटन हेयर। इट मींस जनाब अली, इट मींस अब आपने एक साल में 12 दफा इंटरेस्ट अप्लाई करना है, राइट। अब आपका इंटरेस्ट होगा 12 दफा।
अच्छा जनाब अली, लेट्स सब्स्टिट्यूट इनटू द फॉर्मूला। बी केयरफुल, आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 1.042, बिकॉज आप कंपाउंडेड मंथली है। Similarly, look at the n. N is not 1, it's 12 because एक साल में 12 दफा इंटरेस्ट लग रहा है मंथली रेट पर। Let's calculate, this is going to be your new amount। और जनाब उसने यही पूछा था आपसे कि जी अमाउंट बता दीजिए, तो we end here, no more interest। आइए जनाब अली, Annie invests $8,300 at a rate of this compound interest। Calculate the value of her investment at the end of 6 years। जनाब be careful, उसने पूछा है value of investment at the end of 6 years। They didn't ask you the compound interest। आइए सरकार, formula, substituting the values। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6 पर इंटरेस्ट है, टाइम 6 years है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मीन साल में 6 दफा इंटरेस्ट लगेगा, सो एन इज गोइंग टू बी 6। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। जब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 8,000, रेट ऑफ आ गया 5.6, एन आ गया 6, वी गॉट दिस आंसर। जनाब अली, आफ्टर दिस मींस this is your accumulated amount because they didn't ask you about the compound interest। Mira invest $700 in an account, paying compound interest at a rate of R% per year. At the end of 17 years, the value of her investment is this much. Find the value of R. Look at very carefully. The Mira invests $700 compoundedly, compound interest, and she received this much amount. Remember, this is not the interest. This is the investment accumulated amount that he received after 17 years. What is going to be the interest? I देखते हैं। The formula is here. Substitute the value. Principal amount $700 है, rate of interest R है, जो हमें ढूंढना है, time 17 years है। चूंकि यहाँ कहा गया है compound interest पर ईयर एनुअली है, लिहाजा हम यहाँ पर N17 ही इस्तेमाल करेंगे। Look at this. This is our accumulated amount they gave us. So I substituted the value. The accumulated amount is this. Principal amount is 700. Rate का पता नहीं, N17 है जनाब। 700 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाकर डिवाइड होगा। Now I took the root of 17 because there is a power 17। इफ यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो हम यहाँ स्क्वायर रूट अप्लाई करते, यहाँ क्यूब होता तो हम क्यूब रूट अप्लाई करते, क्योंकि द पावर 17, so therefore we will apply the root of 17। So it's going to be 1.023। Look at this one, I shift this one over here and it subtracts। Notice that सबसे पहले इस वन को हमने यहाँ शिफ्ट किया, वन सब्ट्रैक्ट हुआ, आर को वहां शिफ्ट किया, आर वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, एंड वी गॉट दिस आंसर। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 2.3%। तो इस रेट से उस मीरा ने इन्वेस्ट किया था, तब जाके उसको $700 के अगेंस्ट इतने पैसे मिले और कंपाउंड इंटरेस्ट इन 17 years। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला हमारी साथ कनेक्ट रहिए, हम आपके साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहेंगे इसी तरह से। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं। एनी क्वेरीज यू हैव यू कैन आस्क मी इन द इनबॉक्स। इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरह हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।